So, good evening, everyone. My name is Shruti. I'm your moderator from Shiksha. And if you are willing to participate in Moot Court Competitions, this session is for you all. And we have with us our current college students who are doing law and have participated in Moot competitions previously, Sajal, Jain, and Raunaq Bali with us. So, please start posting your queries in the Q&A section. And meanwhile, I'll ask both of you one by one to give a brief introduction about yourself. We'll begin with you, Raunaq. Hi, Raunaq. Please introduce yourself to the audience. Hi, hi. Your audio is breaking. Okay. Just let me know if I'm Sajal will audible now. begin, right? He'll be starting with the written submission. It's fine. I will proceed further. Your voice is breaking. Am I audible? Yes, you are. Yeah. Okay. So should I begin? Yeah, sure. Yeah. So guys, to introduce myself, I'm Sajal. I hail from state of Madhya Pradesh, and I have qualified my CLAT examination twice. In 2017, I got into the National University of Odisha, and in 2018, I got into the Gujarat National University. But due to furtherance of clearing judiciary, I've taken dropout from GNLU, and right now I'm pursuing my law from RKDF University, Bhopal. So in the past, I have done 5 Moot Court competition, which includes Surana and Suranas, and one of the best Moot Court competition into the world level, as well as arbitration too. So I will start with the strategies, how to plan up the things, like how you can draft a memorial, submissions, how you can give the things to the Moot Court committees, what exactly the judges are expecting from you, and what you can give to the judges. And my teammate Raunaq will be giving up a roundup session that how you should have to present into the oral rounds before the judges, and everything is done by him. So let's get started into the things, how to make the things like facts of the cases, issues and judgment. So for this, I would like to just give you one things like I have a word memorial with me. So I will give you in short so that you can get analysis from the same, that how you can draft the same. Just one question from an anonymous attendee. He's asking how to join my friends. Dear, you must have received a joining link on SMS or on your mail. Please give that link to your friends and they can easily join in. Thanks. Yeah, you may begin. So basically, what exactly is Moot Court? Any one of you have any idea? From audience point of view, because you all are law students, I guess, and I do believe that you have a ample of idea what exactly the Moot Court is. So any one of you want to make it the session interactive? Because if we both are keep talking and talking, and if you are not getting anything, then it's not a useful session. So I want my audience to be active. Yeah, it will be boring otherwise, guys. You'll have to reply. I've unmuted 2 participants to raise their hands. Seema and Disha, if you would like to speak. Hello. Yeah. Disha, hi. I am audible? Yeah, Yes, Disha, you're you are. audible. A moot court is a competition in which participants analyze a problem, research the relevant law, and prepare written submission. It is basically a mock court competition. Okay, mock court competition, very good. But it also includes oral submissions. Any other? जड़ से निकाल दिए. Can you just mute yourself, guys? Okay. We have got an answer from Bhumika. She's saying Moot Court is like a practical training of the real court. Okay. So in short, Hindi में what is Moot Court? Normal language हिंदी में अगर अपन बोले Moot Court क्या है exactly? एक शॉर्ट सी लैंग्वेज में, जैसे 3 इडियट्स में वो 3 इडियट्स वाला चतुर रामलिंगम वाला लैंग्वेज छोड़ के रणछोड़ दास वाला लैंग्वेज में पूछे what is Moot Court? So what is Moot Court in short and easy language? Any one of you? Disha, if you want to answer once again, you can.
I guess Raunaq, you should answer the Ramalingam answer. एक Okay, रियल जो कोर्ट में केस चलता है उसका एक मॉक कोर्ट, मतलब उसका एक मॉक केस होता है कि स्टूडेंट्स को ब्रीफ आइडिया मिले कि क्या होता है, कैसे कोर्ट रूम में केस प्रेजेंट किया जाता है और ये सब। हाँ बिल्कुल वेल सेड। तो बेसिकली अपन को ये जानना है कि अपन लॉयर बनने जा रहे हैं, अपने पास एक स्किल्स होती है। लॉयर्स आर बेस्ट गुड इन ड्राफ्टिंग। फर्स्ट थिंग, ड्राफ्टिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये ड्राफ्टिंग की स्किल्स आती कैसे है? एक आईपीसी की बुक या एक कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट या कि कुछ एक बुक्स पढ़ करके स्किल्स जनरेट नहीं होती है। बिकॉज लॉयर्स आर समथिंग जो कि डिफरेंट डिफरेंट डे टू डेज पे हम लोग चीजें करते जाते हैं, हमें एक आइडिया रहता है। तो लॉ स्कूल्स हमें स्ट्रेच करता है। किसी लॉ स्कूल्स पे मूट कोर्ट होते हैं, किसी लॉ स्कूल्स पे नहीं होते हैं। व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, देयर वाज अ मूट कोर्ट कंपटीशन, बट राइट नाउ आई एम इन आरकेडीएफ, देयर आर नो मूट कोर्ट कमिटीज, देयर इज नथिंग। बट एक क्वेश्चन आता है कि ये जरूरी है कि नहीं है। सो इट्स अ स्किल व्हिच इज डेवलप्ड एट अ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सो फ्रॉम माय साइड आई विल से कि एक स्किल डेवलपमेंट पार्ट है क्योंकि आपको खुद से डेवलप करना पड़ता है। लॉ स्कूल विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली, बट अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। बिकॉज Raunaq is also doing excel into the moot courts. He is from Delhi University and he has participated in international arbitration moot court recently. So he will guide you also about it. So let's begin what exactly the moot court is. So एक छोटी सी लैंग्वेज में समझते हैं। moot court क्या होता है? एक तरह का मॉक कोर्ट होता है जो कि रियल कोर्ट नहीं होता, बट आपको फीलिंग देता है रियल कोर्ट जैसी। जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा एक चीज रियल कोर्ट पे होता है, सेम उसी तरह चीजें मूट कोर्ट पे होती है, जहाँ पे एक जजेस आते हैं, एक पैनल आता है जजेस का, नॉट एक्जैक्टली सिंगल जज बट अ पैनल ऑफ अ जज। एक मूट कोर्ट प्रॉब्लम आपको प्री डिसाइडेड बेसिस पे मिलती है, वेयर यू वर्क एज अ काउंसिल फॉर व्हाट, काउंसिल फॉर पिटिशनर एज वेल एज फॉर काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। तो आप दोनों की जगह पे आकर के आप दोनों की काउंसिल्स बनते हो, पर आपको एक मौका दिया जाता है टू प्रेजेंट। अब समटाइम इट में भी हैपन कि आपको पिटिशनर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, समटाइम इट में हैपन कि आपको रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब वहां पे आपको क्लियर हो जाता है, बट ड्राफ्टिंग आपको दोनों की करनी रहती है। इट मे बी क्लियर फ्रॉम पिटिशनर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल फ्रॉम रिस्पोंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इन सम कॉलेजेस दे आर क्लियरली मेंशन कि आपको सिर्फ पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्ट करना है। सो ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट। अब क्या होता है जब ड्राफ्ट करते हैं तो इसका जो फर्स्ट पेज होता है, फॉर पिटिशनर पॉइंट ऑफ व्यू जो फर्स्ट पेज बनेगा वो पेज ब्लू कलर का होता है, एंड फॉर रिस्पोंडेंट साइड ऑफ व्यू जो फर्स्ट पेज होता है वो रेड कलर का बनता है। दैट्स द बेसिक थिंग यू शुड हैव टू नो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि मूट कोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। सो मूट कोर्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग इज अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड से रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च स्किल बहुत अच्छी है, if you are good in research, if you have a good ample of knowledge, because they are not there to check your grammar कि how good your grammar is, how good your punctuations are, they will play a role I will say, but आपकी रिसर्च स्किल, आपके केसेस, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ योर ग्रामर्स एंड एवरीथिंग। सो दोज ऑफ यू हु आर अफ्रेड कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट मेक श्योर कि आपकी रिसर्च स्किल अच्छी हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर नो हाउ टू यूज एसएससी और मनुपात्रा? I told you this session is not like कि मैं और रौनक आकर के represent कर रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। We will keep asking the questions from you. How many of you know how to access Manoupadhaya? Okay, you could guys, just raise your hands. Yeah. The participant, those of you who do know the answers to any of the questions that we asked, you can just straight away raise your hands in the chat box. That will be enough to indicate. Okay, so whether he knows how to use, Amrit knows. Anyone of you tell me कि access है आप लोगों के पास और नहीं है अभी as of now. So I will move to my page. Yeah. So these are the paid website which I have suggested as of now. तो SCC कैसे यूज करते हैं या मनुपात्रा कैसे यूज करते हैं, me and Raunaq will make another session for that कि उसको यूज कैसे करना है, how that should be a useful tool for you. Now coming to those aspirants जिनके पास, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 हैंड्स ही रेज्ड अप हुए as Raunaq pointed out, so we are not stretching out how to use SCC and Manupatra as of now, but we will keep telling you क्या free resources से कैसे चीजें निकालें, which is based upon the CRPC and IPC based. So what you have to do in
दैट पर्टिकुलर डोमेन आपको उस पर पहले क्रक्स निकालना है, बिकॉज सपोज इफ दिस इज अ फैक्ट ऑफ द केस, suppose this is a fact of a case of 2 to 3 lengthy pages, so what you have to do, आपको हर एक मूड प्रॉब्लम को एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स पढ़ना है. रीजन इज दैट आई नो कि सबकी इंग्लिश अच्छी होगी, 5 to 10 टाइम्स पढ़ने के लिए रीजन ये है कि उस प्रॉब्लम से आपको क्रक्स पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर, वेयर द थिंग्स आर लैकिंग. तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पकड़ करके उसके बाद पे अपने जो फैक्ट्स आपने 4, 5, 10 बार पढ़े, जैसे इंग्लिश में प्रीसी राइटिंग होती है ना, जब बड़ा सा चीज होता है उसको आपको प्रिसाइज करके छोटा सा कंटेंट करना है, तो सेम वे यू हैव टू डू ओवर हियर आल्सो. तो आपको उस छोटे बड़े से फैक्ट को प्रिसाइज करके छोटा सा करना है. जैसे आपका वो जो इस फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो फैक्ट्स छोटे हो जाएंगे, इट शुड बी इजियर फॉर यू टू रिप्रेजेंट बिफोर द कोर्ट कि आपने जो फैक्ट्स है आपके एकदम छोटे छोटे हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जैसे आपके फैक्ट्स क्लियर हो गए, वंस यू मेक द फैक्ट्स इन अ स्मॉलर वे, अब आप उसी फैक्ट से इशू रेज अप करके आ जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली द इशू अराइजेस दिस. सपोज इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ मी एंड रौनक आर पार्टिसिपेंट इन अ मूड, एंड हम लोगों की एक टीम है जहां पे हमारा एक छोटा सा मूड कोड प्रॉब्लम है व्हिच इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड और नॉट. हमें ये पॉइंट प्रूव करना है, एज वी ऑल आर नोस कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग. सो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाएंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, पास के केसेस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कि किस केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो. अब उसकी हम रिसर्च लेकर के आएंगे, उसकी चीजें लिखेंगे, उसके कंटेक्स्ट देखेंगे. अब नॉट फ्रॉम द इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू बट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लोर टू द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी मूट कोर्ट प्रॉब्लम में कहीं पे ये नहीं लिखा रहता कि वेयर शुड बी द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल. किसी भी कंट्री का जुरिडिक्शन लग सकता है, हो सकता है आपकी मूट कोर्ट प्रॉब्लम ऐसी बने जिसमें जर्मनी का जुरिडिक्शन लग जाए. तो यू शुड नॉट कंटेक्स्ट योरसेल्फ टू इंडिया, मतलब सिर्फ आपको इंडिया तक ही सीमित नहीं रखना है अपने आप को. यू कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर, जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन से कि हाँ इस कंट्री के में इस पर्टिकुलर केस लॉ पे ये बोला कि द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वॉइड एब इनिशियो. आई डू बिलीव यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे सबने फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ किया होगा या फर्स्ट ईयर चल रहा होगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक, राइट? So the case which I'm talking about is कि contract with a minor is void ab initio. बहुत सिंपल सा केस लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का. Anyone point out कौन सा केस लॉ है? Started with M. मोहरी, इतना हिंट दे दिया. Anyone of you? जितने लोग फर्स्ट ईयर में हो वो तो आंसर कर दो. हाँ, मोहरी बता दिया, मोहरी बीबी बता दिया, उसका नेक्स्ट वाला नेम बता दो. There are a lot of hands, 6 hands are raised. Please post your answer in the chat box. Okay, so at least 5 people know. That is good. Yeah. We are also waiting for an interactive session from your hand. So just keep answering the questions. Guys, please use the chat box. We are also getting questions in the Q&A section. I'll read out them for both of you. We'll take out the Q&As at the end of the session, right? Sure. That will be better. Sure. Yeah, Mohari B versus Damodar Das Ghosh. So exactly अब इस केस का अपने पास अब केस लॉ मिल गया. अब अपन को समझ में आ गया कि हमें अब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन नेचर, है ना? वॉइडेबल नहीं है, वॉइड एब इनिशियो है. अब दोनों चीजों में कंटेक्स्ट आया. अब सपोज केस लॉ मिलता ही नहीं, ये तो बहुत इजी सा प्रॉब्लम दिया जहां पे केस लॉ इतना इजी मिल गया. बट इन रियलिटी मूट कोर्ट पे क्या होता है, आपको इतनी जल्दी केस लॉ नहीं मिलता. जस्ट अ बिगनर, इट्स अ बिगनर स्टार्ट. सो इसलिए मैंने ऐसा केस लॉ बताया कि जो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे आप लोगों ने बताया मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष, ये एक केस हुआ. अब आप जाओगे एससीसी की वेबसाइट पे या मनोपात्रा पे, वहां पे आपको और केसेस सर्च करने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू माइनर्स. गूगल पे भी जाकर के आप डालोगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू माइनर्स, इंडियन कानून इज अ फ्री वेबसाइट. ऑल्दो डोंट यूज एज अ रेफरेंस कि इंडियन कानून से साइट किया, साइट इट फ्रॉम अ गुड पब्लिकेशन, बिकॉज इंडियन कानून का कई कोर्ट्स पे मतलब रेफरेंस लेते हैं, कई कोर्ट पे नहीं लेते हैं. तो डाउनलोड इट फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट्स जो मैंने पहले सजेस्टेड की, ऑल्दो दे आर पेड वेबसाइट्स, बट या आपको इसके AIRs वगैरह भी मिल जाएंगे किसी बुक से जजमेंट, सो यू कैन कीप साइटिंग फ्रॉम देयर एज वेल. नाउ क्वेश्चन कमिंग अप कि ये तो बन गया, अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बन गया, इशू भी पता चल गया. नाउ हाउ यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट एडवांस, मतलब आप इसको आर्ग्यूमेंट एडवांस कैसे बनाओगे इस पे.
कि how you can point it out कि ये contract void ab initio है कि नहीं है. तो first thing is that एक साइड से आपको किसके साइड से बनाना है, आपको पिटिशनर के साइड से. सपोज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पिटिशनर एंड यू हैव टू से कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. सेम उसी वे में रिस्पोंडेंट के साइड से भी आपको बनाना पड़ेगा समथिंग. फ्रॉम रिस्पोंडेंट साइड आल्सो यू हैव टू रिप्रेजेंट कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वॉइड एब इनिशियो. अब उसके केस लॉ फाइंड आउट करना है. नाउ टेल मी कि ऐसा कौन सा केस लॉ है जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर्स आर नॉट वॉइड एब इनिशियो. एनीवन हैव एनी आइडिया? Guys, if you're not able to use the chat section, please post your answers in the Q&A section. Harsh has raised his hand. Harsh, would you like to speak? Yeah, hint BT app. We have got an answer from an anonymous attendee. Hint बताएं आप. Okay, there is no hint. Just tell me, because मैंने first में तो बहुत easily hint दे दिया था. Okay, let's forget about the case law. Let's come to the section. कौन से section पे बोलता है कि you can claim with the minor as well. Whatever you have given, you can claim with the minor. Okay, I'm giving you another hint. Section 65 से 70 तक के बीच पे है Indian Contract Act पे. I'm giving you 2 minutes time. Just find it out. Take a Indian Contract Act 65 से 70 के बीच में, ज्यादा हिंट नहीं दे रहा हूँ, 65 से 70 के बीच में. Just find it out where it is. Let's become a researcher from the very beginning in the session itself. Okay, Disha is saying 68. Yeah, 68. What it says? Disha, can you read it out? Rishikesh is asking to repeat the question. Sorry, ma'am, can you please pardon? Rishikesh is asking you to please repeat the question. Okay, so I am saying the contract is void ab initio. इसका आंसर तो सबने दे दिया, मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष, क्योंकि मैंने मोहरी बीवी बता दिया, दामोदर दास घोष इज जस्ट अ गुड हिंट. अब मैंने ये बोला एक साइड से तो आपने मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष को साइड कर दिया, अनदर पार्टी रेस्पोंडेंट हो आप. अब आपको केस तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द केस इज, बिकॉज केस ढूंढना आपके लिए डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ. आई एम आस्किंग कि किस सेक्शन पे ये लिखा हुआ है कि दैट वी कैन क्लेम विद द माइनर आल्सो certain amounts of money, in which section it is defined in Indian Contract Act. Hint दे रहा हूँ 65 से लेकर के 70 तक के बीच में है. Just find it out the section. We got an answer from Bahai. She answered claim for necessary. We've got another answer. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. Okay, great. So basically ये बेयर एक्ट को अपन ने एज इट इज कॉपी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है. So बेयर एक्ट को कॉपी करना इज नॉट समथिंग. आई एम आस्किंग कि क्या बोल रहा है वो सेक्शन. आई एम नॉट आस्किंग व्हाट एग्जैक्टली द बेयर एक्ट इज सेइंग. मेरे पास भी बेयर एक्ट है, रौनक के पास भी है. वी कैन आल्सो रेफर टू द बेयर एक्ट्स. सो इट्स जस्ट से व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग. 68 में क्या बोल रहा है? सिंपल लैंग्वेज in one or two words. Yes, the point of a moot court is to construct the arguments from both sides. Okay, you will be required to construct it from both sides, as from the petitioner as well as the respondent. Okay, so when you do some research regarding, say, when you are preparing a memorial or arguments for the plaintiff or the appellant, right? So you will be definitely looking for the sections, for the case laws, for other commentary, anything that is said by any other judge in a foreign jurisdiction. Although foreign jurisdiction judgments are not binding in India, but they do have persuasive value, right? So when you do that, you will also be looking for the opposing thing. So if you are preparing argument A, you'll have to prepare argument B that counters it. So you'll have to prepare from both sides always while preparing a moot court. Although you in the real world you'll be making just one side. एक ही side से argue करोगे. Be arguing from just one side. But in moot courts you will be required to from both the sides. So when you look for a judgment or when you look for a case,
while reading the judgment, also refer to the opposing counsel's arguments, right? So when you read a judgment, judgments usually run into hundreds of pages, right? 200, 300, even there are judgments that are more than 800 pages, more than even 2000 pages long judgments, right? So those judgments usually include both the sides' arguments, right? They will be including the argument from the plaintiff, what the counsel for the plaintiff said, and those judgments will also include a summary of what the respondent said, what the counsel for the respondent. So while doing that, you read what they have said, you read what cases they've cited. So if there is a contract-based question, as Sajal mentioned, so whatever arguments the plaintiff has said, the counsel for the plaintiff, that will be definitely countered by the respondent. Obviously, yahi to kaam hai. That is the job of lawyers, right? They have to argue with each other. They have to try and beat their opponent through a legal point, through some precedent, through some other statutory provision, or any other thing that they deem fit. That is in the legal purview, right? So while doing that, read that as well. Read the judgment, read what cases the opposing party has cited, because that is what will help you in preparing for the other side. While you are making petitioner's memo, you will be reading the whole judgment. You will see what the defense counsel in that particular judgment has said, what the defense counsel has cited in that judgment. So then you read that judgment, then you search for that particular cited judgment. That is how you research, because nobody knows how many judgments exist, right? The only judgments that are of relevance are the ones that are cited in courts, that are mentioned by the lawyers in the courts, by the advocates. So that is how you research. That is how you find a relevant case law to your particular issue, pertinent issue. That is how you do it. Back to Sajal. Thanks, Raunak. So once again, I'm back with the things. Like देखो हम लोगों का यहाँ पे बेसिक पर्पस ये नहीं है कि एक सेमिनार कंडक्ट किया कि हाँ तुम लोग आए, शिक्षा से कंडक्ट हुआ, कुछ नहीं सिखाया, टाइम पास किया, चले गए, एट द एंड ये नहीं बोलना तुम लोग घर जाके. तो यू शुड, हम लोग ये अवेयर करा रहे हैं आपको कि अगर आप चीजें से साइट करना सीख रहे हो, चीजें देखना सीख रहे हो, जैसे आप लोगों ने सेक्शन बताया, सेक्शन इज रिक्वायर्ड, आप सेक्शन एज इट इज वहां पे कॉपी करोगे, बट हाउ टू रीड द सेक्शन, वो केस लॉ कहाँ से ला रहे हो, वो चीजें कहाँ से ला रहे हो, बिकॉज मूट कोर्ट इज समथिंग जहाँ पे आपकी खुद की स्किल्स काम आती हैं. जैसे व्हेन आई वाज इनटू माय फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ, आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग के में स्लिप सिस्टम होता था. तो देयर वाज अ स्लिप सिस्टम कि आप जाओ अपनी स्लिप कलेक्ट करके आओ. तो हम लोग को स्लिप, एक में पिटिशनर, एक में रिस्पोंडेंट डाला रहता था. तो मोस्ट ऑफ द अस वर डूइंग दैट कि हमें पिटिशनर की स्लिप है, यार पिटिशनर की साइड टफ है, रिस्पोंडिंग साइड इजी है, वो जीत जाएंगे, पिटिशनर वाले हार जाएंगे. तो डोंट कीप दिस थिंग इनटू द माइंड. both these sides have a equivalent opportunity. तो मतलब आपके अगर पास पिटिशनर का साइड भी आया है, हो सकता है उसका पॉइंट स्ट्रांग हो सकता है रिस्पोंडेंट का साइड वीक हो. यू हैव टू वर्क अपॉन द रिस्पोंडेंट साइड कि आप रिस्पोंडेंट के साइड को स्ट्रांग कैसे कर सकते हो. सो बोथ द साइड्स हैव अ इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी. मींस सपोज अगर हम और रौनक एक मूट कोर्ट कर रहे हैं, वेयर आई वाज अ पिटिशनर, रौनक वाज द रिस्पोंडेंट. अब यहाँ पे अगर अपन वापस मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष पे आते हैं, an agreement with a minor is void ab initio. मुझे petitioner side मिली है, Ronak has to do the opposite. Ronak is an opposite as a respondent. How many of you are thinking my side is more stronger than a Ronak side? Answer me. Okay, guys, start answering. We've got a lot of responses in the Q&A section for the previous question that you asked. Rishikesh, Bhai, Ashish, everyone is answering in the chat box. Okay, ma'am. So, guys, would you like to let us know the question that Sajal has just asked? Which side do you support? Okay, Disha wants to talk. Disha, should I unmute you? Repeat the question, please. I'm just saying कि suppose if there is a moot court problem based upon certain things, a contract with a minor is void ab initio. Okay, where I'm a petitioner and Ronak is a respondent. Ronak has to defend, no, a contract with a minor is not void ab initio, looking to a certain terms and condition as defined in section 68, whatever the Ronak will say. In future, it's up to him. बस हमारे पास अभी at present एक particular problem आई है कि a contract with a minor is void ab initio. इसी के बेस्ड पे हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, अभी प्रॉब्लम पूरी अंदर नहीं गए हैं, जस्ट 4-5 पैराग्राफ पढ़ लिया.
एंड हमने पता चल गया कि अच्छा हाँ पिटिशनर की साइड स्ट्रॉन्ग है कि रिस्पॉन्डेंट की साइड स्ट्रॉन्ग है. अब हमें ये डिसाइड करना है तो whom you will support कि किसका साइड स्ट्रॉन्ग है, मेरा साइड या रौनक का साइड. Ritisha is supporting petitioner side, and Parul, Riddhima have raised their hands. I've allowed you to speak up, guys, if you Sure ma'am, want sure. to. Riddhima, yeah. I think that your side is stronger because it's already written, so we will follow that eventually. Okay. I would like to support the petitioner side. Okay, so Parul is see, supporting the petitioner side. okay, may I know the reasons, please, from both of you? Because if you are supporting petitioner, then there is something going on in your mind while deciding. Actually, as you said, a contract with minor is void ab initio. We all know that. There are certain conditions, but we don't know the conditions right now. So as of now, I would like to just support the petition. Okay, got it. Ridhima, any answer from your side? Yeah, I think it's the same that it's written, so we will go as per it in the start because we don't know the facts of the case. Okay, got it. And suppose if you both are a judge now, don't take it as a supporting us. Let's keep yourself as a jury member, or you can say justice on the same Moot Court memorial where me and Raunaq are representing. Now, how you will decide that which side is stronger, like petitioner side or respondent side? We will obviously go as how the law is written. We'll go according to that. Will you not go to the... Yeah, of course, we'll go to the facts of the case. I thought you were saying that how will I decide at this stage? No, suppose we have just concluded the entire thing. We have given the entire thing. I have presented my side, Raunaq has presented his side, and we have given a good cases to you. Okay. 6:40 we'll have to wrap up in a few minutes. Yeah, sure. Sorry, I forgot. So Yes, basically, yeah. I would like to say that if a contract is done in favor of, like, for the benefit of the minor, then of course I will go with that decision. Okay. So now I'm coming back to our Moot memorial. Both of you have answered correctly as per your view. So I will say one thing. The Moot Court deciding factor is what you are giving in argument. Okay. And argument advance. While you have making an issue, उसके बाद आप argument advance बनाते हो, उस पे आप बहुत सारी चीजें लेके आते हो, जैसे आप cases लेके आते हो, आप चीजें लेके आते हो, आपने argument advance लिखे, उस पे आप बताते हो कि why you are citing this, where it is lacking, आप उसमें पुरानी verdict लेके आते हो, precedents कहते हैं जिसको, प्रेसिडेंट्स ऑफ द कोर्ट्स लेके आते हो, वहां पे आप केस लॉ लेके आते हो. तो जरूरी नहीं है कि एक साइड पे अगर अपन को ऊपर से फैक्ट्स दिख रहा है कि हाँ इसकी साइड स्ट्रांग है, जरूरी नहीं है वो साइड स्ट्रांग हो. जैसे रौनक के साइड पे अगर सेम यही केस मेरे पास आता, आई कैन डिफेंड इट फ्रॉम बोथ द साइड, और इतना इक्विवेलेंट बना सकते हैं अपन कि एनी पार्टी कैन विन. मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. अगर ये हो जाए तो अभी तो अपन सब माइनर है, एज वी आर इन कॉलेज 17 होंगे जस्ट अगर इन फर्स्ट ईयर ऑफ 5 years LLB, तो अपन सब कुछ जाते हैं मार्केट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे भी वॉइड एब इनिशियो है, अपना कुछ जाना नहीं है. तो इस तरह में तो फिर हर बच्चा, छोटा बच्चा भी जाए वो भी कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, एट द एंड उसको कुछ नहीं मतलब लॉस होगा. So for that there are certain guidelines are issued by the court that you have to given from the respondent side. So while respondent are making the decision, तो ऐसा हो सकता है अपन ने सिर्फ मोहरी भी पढ़ा है, उसके अलावा भी कई सारे केसेस हैं जो कि रिस्पोंडेंट के फेवर्स में हैं. सो वी कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि कौन सा साइड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा साइड वीक है. तो वी हैव टू डू एम्पल ऑफ रिसर्च अपॉन द पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे अपन ने रिसर्च कंप्लीट की, बोथ द साइड्स हमने केस लॉ दिए, एंड वंस द रौनक का साइड से भी केसेस आएंगे, मेरे साइड से भी केसेस आएंगे, then as a jury, as a judge, you have to see the facts and the circumstances of the case. Fact क्या है, circumstances क्या है, खुद का mind applicability, as well as what law says for that particular thing. हो सकता है India law is silent about India law says contract with minor is a void ab initio, but आप कहीं का moot कर रहे हो which is of Germany, and Germany's laws allow a contract with minor is not a void ab initio. So it depends upon the particular jurisdiction what you are choosing. So first thing is while drafting a moot court case, first page तो मैंने बताया petitioner का पेज बनेगा, that is of blue in nature.
देन यू हैव टू कम इनटू द इंडेक्स. इंडेक्स की ड्राफ्टिंग करनी है आपको. इंडेक्स पे आपको सारी चीजें लिखनी रहेगी. वी विल कीप ट्राइंग टू शेयर द डॉक्यूमेंट फर्दर. उसके बाद पे आता है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन. अब आपको ये लेके आना है कि क्या उस पर्टिकुलर कोर्ट का यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा. लाइक सपोज इफ आई हैव टू से कि there are some certain things which I want to take into the court of law. So I have to prove it before the court कि हाँ आपका statement of इसमें आपका jurisdiction है and you are in a position to handle this case. जैसे suppose अगर मेरे पास jurisdiction नहीं है किसी चीज का and Raunaq has brought up the case before me और suppose Shruti ma'am has brought up case before us and इनके पास jurisdiction ही नहीं है, हम लोग उसको we are not a competent to try that particular case. That entire trial goes to vitiate. जो ट्रायल है पूरा vitiate हो जाएगा just because of not having a particular jurisdiction and हम लोग उसके लिए competent judge या authority नहीं होंगे. Once we are not competent judge and authority and we do not have a jurisdiction, तो वो केस क्या हो जाएगा, वो पूरा ट्रायल vitiate हो जाएगा. So अपन को किसी भी मूट कोर्ट पे जाने के पहले we should have to be very much clear कि क्या उस कोर्ट के पास उसका statement of jurisdiction है कि नहीं है. So where you will get a statement of jurisdiction, statement of jurisdiction जब आप पूरा facts पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इस पर्टिकुलर केस का जुरिडिक्शन है नहीं है. एंड यू शुड गो इनटू द थिंग्स और वहां से आप उस पर्टिकुलर लैंड या कि उस पर्टिकुलर जो आपके मूट कोर्ट प्रॉब्लम है जो भी उसमें कंट्री लिखी होगी उसके बेस पे आप उसका जुरिडिक्शन लेके आ सकते हो. एंड देन यू हैव टू से कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर हम ये चीजें आपके कोर्ट पे लेके आ रहे हैं एज अ स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन. नाउ कमिंग इनटू द पिक्चर, फैक्ट्स की पिक्चर तो मैंने बहुत क्लियर कर दी. फैक्ट्स पढ़ना, शॉर्ट्स करना है अपन को फैक्ट्स. उसका इश्यू कैसे बनाना है वो भी आई हैव डिक्लेयर. Now I will hand over to the Raunaq and Raunaq will tell you about the how to go for a roundup of Moot Court. Thank you. Take up part from that. Raunaq, please take up the mic now. Yeah, we have some queries in the chat box from Harsh. Raunaq, if you would like to just take it from here. Okay, yeah, sure. I'll just take up the questions first. Yeah, Harsh, you may just should ask I take up the query. questions first, or should I speak about the oral rounds first? Yeah, you may speak it. Just Harsh is requesting for a long time to speak. Harsh, you may just ask your query quickly there. Yeah, Harsh, go ahead. Yeah, sir. Good evening, sir. Hi, good evening. Sir, I have a point really. आपने पूछा था कि रेस्पोंडेंट साइड से आप क्या आर्गुमेंट करेंगे. आई डोंट रिमेम्बर द सेक्शन बट वी से दैट इफ माइनर अगर अपनी एज छुपाता है और फिर कांटेक्ट करता है तो अपन आर्गुमेंट में कह सकते हैं कि जो माइनर है उसने मेरे को एज छुपाई थी तो मेरे को पता नहीं था कि वो माइनर है. हाँ, तो आई डोंट रिमेम्बर द सेक्शन बट आप ये प्रूव अगर कर सकते हो, अगर आप ये आर्गुमेंट में प्रूव कर सकते हो कि माइनर ने अपनी एज छुपाई है, अगर उसको उसने फ्रॉडुलेंटली कंसील करा है तो ऑब्वियसली वो आपके फेवर में जाएगा ना. अगर आप अपोजिंग पार्टी हो, आप अगर डिफेंडेंट हो तो उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि इसने अपनी एज छुपाई थी. अगर मुझे इसकी एज पता होती तो मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता ही ना इस माइनर के साथ, लेकिन इसने ऐसा दिखाया कि 18 से ऊपर है और इसीलिए अब मैं फंस गया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था. आप उसमें ये प्रूव करोगे ना किसी ना किसी कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी जेस्चर, वर्ड, एक्सप्रेशन के थ्रू माइनर ने इंडिकेट किया हो कि वो 18 अबव है. तो वो फ्रॉडुलेंटली उसने कंसील अगर अपनी एज करी है, सो ऑब्वियसली दैट माइनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट. ऐसे थोड़ी है कि आप कोर्ट में झूठ बोलोगे और आप बच जाओगे. Yeah, sir. That's why I raise a point. Sir says that क्या आप रेस्पोंडेंट साइड से क्या आर्गुमेंट करेंगे, तो सर ये पॉइंट अपन अराइज कर सकते हैं आर्गुमेंट के अंदर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, या सर. मैं ओरल राउंड्स के बताऊंगा. नहीं सर, बता दिया है, अब आप कंटिन्यू करें. नवीन has asked a question. What if it isn't given the facts, the minor? What if it isn't given the facts, the minor? Raunaq, we will take the question and answer at the end. You should move to the round of section. Naveen, I'll get back to you. Okay. Okay. So half of the part is the written submissions. Okay, that is what you submit to the court. That are the memorials. Then comes the really hard part. Then comes the oral submissions. Okay. So there are a lot of do's and don'ts that you need to take care about while going for the oral rounds.
The first is maintaining a formal decorum. You cannot, in any circumstance whatsoever, address a judge with any other word or name. There are certain nomenclatures, there are certain words that you use them. My lord or your lordship. Okay, so these are the most common ones. My lord, your lordship. Okay. Apart from that, do not mistakenly take their name. Don't address them as sir or ma'am. Whatever they say, do not address them as sir or ma'am. Always your honor, your lordship, my lord. So two or three things, right? So addressing the judge with the proper terminology, that is important. Apart from that, you do not in any way use informal language. So if a judge asks you something, and or if the judge agrees with you or says something, do not address with yeah, yes, okay, no, not at all. You use formal language. Don't use yep or yeah. Just say I agree, Your Honor. Yeah, I humbly disagree, Your Honor, your Lordship. Okay. So maintaining a formal, that is something that gets you a lot of marks if done properly, and it will definitely get your marks deducted if you don't follow it properly. So I've seen this happen because so this is something that we did in our first intra moot court. So there were people who did not address the judges properly. So they did get their marks deducted for that. Okay. Apart from that, keeping your arguments structured, that is a very important thing for moot courts, right? So the first, or rather the most important thing, is to keep a transcript ready. So what a transcript does is it structures your arguments. You keep a paper ready. You type your arguments, whatever you are going to say, you time it. It is very important to time it, because in a moot court you won't be getting a lot of time. You will be getting 5 or 10 minutes or maximum of 12 minutes, because there are a lot of time constrictions on online moot courts at least. Okay, so you have to time your arguments. So write your transcript, get it ready, keep it structured. So your opening statement should be a summary of facts. Okay, you summarize all of your facts, whatever the case is about, but you do it in a manner that is slightly tilted towards your argument. So don't really go with an opening statement that is completely unbiased. Give an opening statement that is tilted towards your arguments. That will always help you, because that will help the judge or whatever the magistrate get a fair idea of which side you are representing, what your arguments are. Okay. After that, you begin with the question of law. What question of law arises in this case, and why is there a need to do justice for your side? Okay. So whatever case you take, maybe UAPA, terrorism, whatever case. So our case law was about terrorism, UAPA. So if you are from the defendant, the person who has been imprisoned, so you take up your points on civil liberty, right to freedom, right to life, right to speech and expression. There are certain points of law that will be violated if your client remains in jail, if that client remains incarcerated. So you bring up the points, you bring up your opening statement, your questions of law, and then how you're going to argue, how you're going to prove what the government or what the other side, your opposing counsel is, why they're wrong. Okay. So you prove that, all of that in a systematic manner. The best way to do that is to keep a transcript ready. You do not go like ऐसे नहीं होगा कि तुम जो वो पूछता जा रहा है तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा, तुम बोलते जाओगे. You cannot go in a free flow manner. You have to keep your thoughts structured. आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा टाइम का. ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हो, because the judge will ask you questions. Then the judges will definitely batter you. इसको battering कहते हैं. So they will batter you with questions. वो बहुत ढेर तुमको करेंगे. They will roast you. Actually, they will roast you in moot courts, at least on points of law, on sections, on something you said. तुमने कुछ भी अगर गलत बोला, कुछ भी छोटा सा भी अगर गलत तुमने कुछ बोला, they will catch it. और वो उसको तुमको बार बार उस चीज पे ना पॉइंट आउट करेंगे. They will raise the questions repeatedly. So that will waste a lot of your time. So if you don't know if you cannot answer what the judge is saying, you just plead ignorance. You just say that the counsel humbly pleads ignorance, or the counsel apologizes for the ignorance, and then you seek permission. In courts, the most important thing, one of the most important things, is to seek permission for everything. So when you are starting your arguments, you seek the permission that
The counsel seeks permission to initiate proceedings, and then you begin with your speech. Then, if the judge is asking you something, you've answered it, then you ask the judge again. The counsel seeks to proceed. Yeah, may the counsel proceed with further arguments. Do not start anything on your own. Always seek permission, right? If you don't know anything, if you don't answer, if you don't know how to answer, you just say that the counsel humbly pleads ignorance, and then you ask them if the court, may the court be pleased, or may we proceed with our arguments. So that is completely fine. What is not fine is proceeding on your own without permission. Okay, so there are certain decorums that still need to be maintained. Okay, apart from that, I've covered opening statements. I've covered what you do, what how you not. Okay, I don't remember anything else that is of very important. Okay, yeah, conciseness, that is important. Conciseness is very important. So you don't beat around the bush. When you get your time to make your arguments, do not beat around the bush. Do not take indirect references or anything. You stick to what your transcript says. You stick to the case law. You stick to the sections, statutory provisions, anything that is relevant. Do not waste the court's time talking about some story that you think will be relevant but is not. Don't waste the court's time. The judges hate it. अगर तुम कुछ वहां पे ऐसा बोल रहे हो जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, जो जज को बकवास लग रहा है, तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे. यू विल गेट योर मार्क्स डिडक्टेड फॉर स्पीकिंग थिंग्स दैट आर नॉट रेलेवेंट. ओके, उसके बाद या plagiarism, that is important. So Sajal has pointed it out in the chat that plagiarism, yes, plagiarism is so look, whenever you are citing a thing, whenever you're citing a judgment or any part that you're relying on in your arguments, you need to cite it properly. You need to cite what that authority is, what they say, when it was said, has it been overruled or not. So yes, this is very important. So listen, citing case laws is not the hard part. Citing relevant case laws is the hard part, because there is a very real possibility that whatever case law you are citing has been overruled by any other court in the future. Okay, so हो सकता है कि 1998 का एक जजमेंट आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो, कि आपके फैक्ट्स को बिल्कुल परफेक्टली वो फिट कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि 2005 में किसी हायर कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया हो. और जैसे ही आपने वो पुराना वाला जजमेंट साइट किया और आपका अपोजिंग काउंसिल कहता है कि 2005 में ओवररूल हो चुका है, यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी, यू विल लूज योर मार्क्स फॉर दैट. तो ओरिजिनलिटी साइटेशन के साथ साथ आपको उसका रेलेवेंस का भी ध्यान रखना है कि वो ओवररूल तो नहीं हुआ या उसका कोई एक्सेप्शन तो नहीं है. बिकॉज देर आर सम केस लॉज, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिनमें एक पार्ट को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं या उसमें एक्सेप्शंस ऐड कर देते हैं कि इस जजमेंट में ये एक्सेप्शंस अप्लाई होंगे. तो यू हैव टू टेक केयर दैट योर केस डज नॉट फॉल अंडर दोज एक्सेप्शंस. Otherwise, you lose all of your relevance. You lose the strength of your argument. Okay. So conciseness is important. Relevance is important. Don't beat around the bush. Okay. Any other questions regarding oral rounds? Because Sajal is typing out these questions for the memorial, and I think these are questions that people can get through footnote making, plagiarism. These are just things that you can always take care of through Microsoft Word. So anybody can just do a simple Google search on how to make footnotes or how to avoid plagiarism. You can paraphrase, you can cite authorities. So that isn't that difficult, I guess. Oral rounds mein marks direct na ho, that is a difficult and that is a tricky part. So anybody has any questions regarding oral rounds? Yeah, I I'll guess just go through the Q&A section. Yeah, the first question was from Priyanka. How to present arguments in an effective manner? I believe I've answered it. I mean, you Yeah, don't beat around the bush. You don't you cite relevant case laws. You go with a ready transcript. You don't waste the court's time. You ask for permission. I mean, pretty much everything that I've said, that was for right. effective communication of the arguments.
I agree. Okay, another question was, would you say exposure to things like money is a prerequisite or is it necessary to be good at these moot courts? Okay, so MUNs are not that relevant, or I mean, I don't know if they're relevant or not. I I have no MUN experience at all, none at all. And there are a lot of people who come from schools or universities the जिनके पास ये MUN के provision ही नहीं है. There are so many schools in India who don't even know what an MUN is, who don't have any provisions, who come from government schools or some district schools. They don't have that kind of exposure. That does not mean that they don't do well in moot courts. They do amazingly well. There are so many people who have never participated in the MUN and are still doing good. I mean, myself included. I mean, I think I'm a fair speaker. Also, one point I missed while speaking for the oral arguments, your body language. Your body language is a very important thing. So even if you're not speaking, say, because in a moot court there are co-speakers, co-counsel. So there will be always two speakers. Okay. So when the other person is speaking, when your co-counsel is speaking, you don't show any arrogance. You show the court that you're attentive. You don't make funny faces. You don't change your facial expressions. You don't show disrespect in any way whatsoever. So when the court is so when your co-counsel is speaking or when the judge is asking your co-counsel anything, don't show weird or inappropriate facial expressions. Like if your co-counsel is making some argument that you don't agree with, do not let it show up on your face. I mean, ऐसे हाथ पकड़ लिया आपने अपने सर में हाथ रख लिया या आप ऐसे कर रहे हो मुंह बंद कर लिया नहीं आपका आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जज भले ही आपसे बात ना कर रहा हो लेकिन जज आपका बॉडी लैंग्वेज को जरूर नोटिस करेगा उसको जब आंखें हैं तो वो देखेगा ना कि बगल में जो बैठा हुआ है उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है कि वो अप्रूव नहीं कर रहा है इस तरीके का गलती कभी भी नहीं करना आप कोर्ट में हंस नहीं सकते हो ये चीज थोड़ा एक ध्यान से सुनो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जजेस कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जजेस ने कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा को काउंसिल से और आपकी हंसी छूट गई कि इसको ये नहीं आता है तुम्हारे मार्क्स कटेंगे उसके नहीं कटेंगे भले ही जज ने उससे क्वेश्चन पूछा है और उसको वो नहीं आता है लेकिन अगर तुम हंस दिए या तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी भी हंसी आई तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे उसके नहीं कटेंगे बिकॉज यू विल बी शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द कोर्ट और जज उसी उसी समय तुमको रिव्यू करेगा कि व्हाट इज सो फनी यू आर नॉट मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द कोर्ट दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रा मूट था तो दिस इज ऑलरेडी हैपेंड वंस एंड दैट गाय उसको बहुत डांट पड़ी थी जज से कि तुम हंस कैसे सकते हो तो इस चीज का ध्यान रखना होता है आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना आपका रिसर्च और आर्ग्यूमेंट्स है ना वही आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या आप इतनी लो आवाज में बोल रहे हो कि जज को सुनाई नहीं दे रहा या आप नर्वस हो नर्वस को तो फिर भी जजेस मान लेते हैं एक बार को बिकॉज पहली बार हो सकता है मूट कोर्ट में आए हूँ बच्चे नर्वस हो जाते हैं दैट इज एन अंडरस्टैंडेबल थिंग completely understandable what is unacceptable is laughing is making a mockery out of the court you do not feel amused in a court you stay serious आप ढंग से उनसे देखो आप ढंग से बात करो maintain a formal decorum at all times okay. Any other questions? Yeah, we have a question. What are the differences? Yeah. Should I speak up for the audience? So you won't be representing both of the parties in the oral rounds. Like simultaneously नहीं कर सकते आप. You will be paired up with the team. So either you will get the respondent side or the plaintiff side. And since you've already made the memorial for both of the sides, you will be well equipped with the knowledge. So you just have to present those arguments in a concise and brief manner. To stick to the time and do not mix up the case laws. This is something that happens with people who are very nervous. आपने पेटिशनर की साइड से केस लॉ प्रिपेयर किए हुए हैं और रिस्पोंडेंट की साइड से आर्ग्यू कर रहे हो तो आप उल्टा आपने जो आपके अगेंस्ट जा रहा है आपने गलती से वही आर्गुमेंट कोर्ट में बोल दिया कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड और तुमने गलत केस का नाम ले लिया तो जज उसी समय तुमको पकड़ लेगा कि ये तो बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा रहा है हाउ आर यू डूइंग दैट सो डोंट जस्ट मिक्स अप द केस लॉज सेक्शंस तो देखो मोर और लेस सेम रहते हैं तो अब कॉन्ट्रैक्ट है तो जिन सेक्शंस के अंडर हुआ है वो तो सेम रहेगा
आपके साइड का केस लॉ बहुत मैटर करता है. तो आपने आर्ग्यूमेंट अपनी साइड का अच्छे से प्रेजेंट किया. यू प्रेजेंटेड योर आर्ग्यूमेंट इन अ वेरी वेल मैनर, but you botched up the case law. You spoke the wrong case law. That goes for the other party. Then your credibility as well as your marks, they'll definitely get affected. So just make sure that you don't mix up the case laws. Right. So we've got another question from Riddhi. Okay, she's asking. Okay, I would ask I don't Sajal see to. that question. I don't see that question. Yeah, it's in the chat box. Just a general question. I entered into my second year of law school and haven't got any opportunity of mooting. So how can I go about it? I would like Sajal to speak up about this. And guys, as we are just running short of time, I would like to just request you all to wrap this session soon. I'll be launching a poll, a feedback poll for all of our attendees so that we can get the feedback from them, how the session was useful to them. And also, I'll be sharing all the relevant links, the Shiksha's page link, my official email ID, and our all the social media handles links for all the attendees. They can watch this webinar on YouTube. It would be uploaded soon. Okay. So Sajal, would you like to just take up the question from Riddhi? So basically, what you have pointed out, कि you are not getting any opportunities into the moot court committees. So there are two things. First thing is that कि आपके law school में हो सकता है intra memorials होते हैं. Based upon the intra memorials, they are allowing you to go outside from the law school. So as of now, first year में तो COVID था. I do understand कि कई जगह opportunities नहीं मिली गई law schools में. Just wait for your turns for second year. But as of now, अगर आप डालोगे Google पे जाके moot court in any law schools, there are certain periods will comes up in front of you जहाँ पे moot court competition होते हैं, जैसे कि a prestigious school of law, National University of Bangalore, Nalsar, even DU, many schools are conducting the moot court competition where you are allowed to participate inside the college. So there are certain kind of fees which you have to pay up. Suppose जैसे कि आपने किसी स्कूल का लिया, I am taking Nalsar. If I'm participating in Nalsar, then there are certain kind of fees like 4,500, 4,000. The fees are subject to the variation. So don't say कि Sajal said कि 4,500 है, and now the fees is here 5,000 something. So it's a very subjective and change year by year. So each participant do not have to pay. The entire team has to pay. So suppose यहाँ पे जैसे रौनक ने point out किया, there are 3 members over a team. So two are one of them the speaker, one of them are researcher, and one of them are representing the things. So on the 4,500 fees, so you have to divide it into the speaker ratio, 1,500 each. So it will not cost much into your pocket. So it's damn easy to get into the entire moot court competition over there. Second thing I would like to say, second thing I would like to say, try to get into the moot court competition at your college first, and then try to fetch into the outside. Because जब आप कॉलेज में एक बार एंटर कर लेते हो, then it will boost up your confidence instead of going into direct into the some moot court memorials outside of your college, because आपने वहां पे किया नहीं है. And your moot court committee will recommend you once you are a good participant over there. आपने moot court में अच्छा participant किया. Suppose you will get a rank of 30, 40 and 50. So if you will get a rank of 50, you will be a part of moot court committee at your particular college. So from moot court committee, you are getting an opportunity of following it's a moot court at this particular college. If you are willing to interest, then fill up the form. So you are filling up from there. So each and every year, हर जरूरी नहीं है. First thing और एक चीज बोलूंगा, एक बार आप select नहीं हुए वहाँ पे, that doesn't mean आप next year participate मत करो. Try to participate in next year. हो सकता है आप next year selected हो जाओ. So keep on track with your moot court committee over there. They will keep reminding you where the exact moot court is going to be happen, which law school is going to conduct. So from my side, that's the thing you can get. Apart from it, you can keep in touch with the ma'am. In Shiksha also, we are trying to keep uploading where the next moot court competition is. So just keep on our website also कि हम खुद भी आपको upload करके बताएंगे where the next moot court will be. Thank you. Thanks, Sajal. Yes, guys, I've shared all the links with you all. Ridhima? Yeah. Raunaq, take up the next. So Ridhima, if you haven't been able to participate in any moots yet, so what you can do is go and watch videos, mock trial videos or moot court videos on YouTube. So most of the moots that have taken place in the last 2 years were online, and they already have been uploaded on YouTube. All of the moots of name any university, name any moot, that recording exists on YouTube. Okay.
whether it be DU or even Harvard Law or Oxford Law schools. I mean, everything exists on YouTube these days because everything is online. So they have uploaded these playlists and videos. You can watch those. You can watch those how people argue, how it happens. So that is something that is a really good learning source for everybody, whether it be arbitration, mediation, litigation, any type of dispute, any type of moot court competition that does have a tutorial video or moot court videos that are uploaded by colleges, that those are actual recordings. जो भी लोगों ने आर्ग्यू किया वो एक्चुअल वही है, वो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को बोला गया कि इस तरीके से बोलना है हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे नहीं होता. जो भी कंपटीशन है वो उसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग होती है ताकि लोगों को पता लगे कि रियलिटी में इस तरीके से आर्ग्यू किया जाता है. ठीक है, so that is one thing that you could do. Then coming to Soumya's question, in case I make any mistake and the judge points it out, shall I say sorry or any formal way to say so? Yes, Soumya, there is a formal way to say so. That is that the council would humbly like to apologize. The council would humbly apologize, would like to apologize. इस तरीके से जज को कभी भी I am sorry मत बोलना. जज तुम्हारा दोस्त नहीं है कि तुम उसको I am sorry बोलोगे. What formal तरीका होता है? The council would apologize. ठीक है? So everything, and you don't say thank you to judges. If a judge has agreed to a request, say if you don't know anything, you don't know the answer to anything, and you request for time. So you'll be saying that the council would like an extension for 1 minute, or the council would like just 1 minute to gather the information. So इस तरीके से तुमने जज से रिक्वेस्ट किया, so judge will say granted. जज ने तुमको 1 मिनट ग्रांट किया कि चलो केस लॉ ढूंढ लो 1 मिनट में. You don't say thank you कि thank you your honor. नहीं, you say much obliged your honor. ठीक है? So there are a lot of terms that are used in courts. Okay, so yeah, keep everything formal. ये thank you, sorry, नहीं, much obliged, apologies, इस तरीके से language होती है. ठीक है? And most of these, what I'm saying is already on. I mean, when you watch mock trials or when you watch moot court videos online, you will see how people actually argue in real life. You will see that. Also, a good way to do that is to go to district courts or high courts and then just sit over there and witness the proceedings. Because ultimately, that is the goal, right? A moot court is an imitation of it. It is just a replica. Nakal kar rahe ho na tum. So that is how you learn. You watch them and you learn. That's it. So I guess, guys, it was a really interactive session for you all and a very useful session. You got the pro tips and tricks from both Sajal and Raunaq. I'm launching the poll. You can see it on your screen. Just start answering, and as you do that, I would just ask both of you to just sum up the session, one line each, just one last tip that you would like to tell everybody, just one line each. Sajal, just one line. Speak up. Sajal, please unmute yourself. So all the best for your upcoming moot courts. Keep doing it, and we pray for your success ahead. Thank you. Thanks, Sajal. Raunaq, one last tip from your side. One last tip. Don't quit midway. That is one important tip, and that is underrated. Okay. Because when your teammates screw up, and they definitely will screw up, either you will or they will. Don't quit midway. Irritate होगा कि यार कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो छोड़ देते हैं. Don't do that. उनको convince करो कि यार participate किया है तो काम करेंगे and we will win this. Go with the right attitude. Don't quit. All the best. Right. And I would like to tell you all, thank you everyone. We are getting a lot of thanks in the chat section. Okay, so I would like to just say all of you that no matter you win or you lose, all that matters is you enjoy this college life, you enjoy your mock moot sessions, mock courtroom sessions, and make the most out of it. Participate in as many opportunities as you can. Follow us on Shiksha. You will get the tips and tricks like these from our campus ambassadors like Raunaq and Sajal and more experienced people from time to time. Keep joining us for the webinars. We're getting a lot of good responses in the poll as well. 100% of the audience is saying that the session is helpful to them all. Jacob is asking the council audience wishes to thank the host. Thank you so much, Jacob. Harsh, Romika, Sushmita, everybody is thanking you both for the valuable session that we had.
So thanks everyone for being a lovely, lovely audience. Thank you so much. We are receiving a lot of responses. So I'll just end the poll quickly. Everyone, just put up your responses so that we can close the poll, and we'll just close the session right here. I've shared all the links with you all. Do follow us, and you'll find this video as well on YouTube. Do try to see that. Okay, waiting for more Zoom classes. Seema said, Seema, keep connected with us on social media. You will get the links over there for all our upcoming webinars. Urvashi is thanking you both. Rishikesh, how will we get notification for next session? Rishikesh, keep connected with us on social media handles. We keep posting our webinars over there. So you'll get all the details for all the upcoming webinars for all the subjects on all our social media handles. Follow us on Instagram, LinkedIn, FB, Twitter. We are posting all our upcoming webinars there. You'll get the registration link over there. Thank you from Jain, Siddharth. Thank you, everyone. Thank you, Raunaq and Sajal. Thank you so much. Thank you, ma'am. Have a nice day. All same to you. Thank you. Bye-bye.